देंगे तो फिर करेंगे क्या। तो कोशिश हम ये करेंगे कि ये कुछ और ऊपर कुछ और चलाएंगे, कुछ और एरिया निकालेंगे। My idea here is to maybe reduce it like this, have a production, and I hope that this one or this one next year is stronger. I cut it out, and this one is going to be closing this. अगली साल की ऑप्शन ये तैयार कर दिए ना जी, इस साल इससे ले लो, अगली साल के लिए ये तैयार की, उस अगली साल के लिए ये तैयार किया, तो जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको फिर काट दो, इसको काट दो। ये लोअर कैनोपी में भी करना है ये वाला काम, किसमें? लोअर कैनोपी में भी करना है। हाँ नीचे भी ये करना। ही इज आस्किंग दैट जब आपका प्लांट ऊपर चला जाएगा तो यहाँ से ब्रांच निकलेगी। कहाँ से निकलेगी? ये वाली कह रहे हैं? नहीं, ये तो फिर ये तो बन जाएगी ना, ये तो बन जाएगी ना। जब आप इसको रिन्यूअल पे डालोगे ऑटोमेटिकली वो नया निकलेगा बाहर। हिज क्वेश्चन इज लाइक इफ वी पुट अ रिन्यूअल हेयर, लाइक वी कट इट हेयर इन 2 years time, so will a new branch, like a new fresh longer branch will come? We hope so. Sure, it's not depends how big is when we cut it. ये सबसे मेन बात। हाँ, जितना ये ज़्यादा मोटा हो जाएगा ना उतने ही चांसेस कम है कि आपका एक अच्छी ब्रांच निकलेगी। Yeah, बहुत कम चांसेस है। you see, here you have buds. Here is at the moment it's not the eye. This one. You see. Yeah. And if it's coming 1 year bigger, it's bigger it is, less buds you will see. You know? ओके। जितना वही बात आ गई, जितना मोटा जाता रहेगा उतने चांसेस कम है कि ये निकलेगा। तो ज़्यादा लालच हमने करना ही नहीं है, बस इस साल फ्रूट ले लिया, अगले साल इसको रिन्यूअल पे डाल दिया। सिंपल फॉर्मूला। और रिन्यूअल का कट लंबा रखने की कोशिश करो ताकि गुंजाइश रहे निकलने की नीचे से। लगभग 4 होंगी। एंड दिस वन इज इट लाइक कैन वी कैन डू दिस आल्सो, shorten this also? You can do it, but then you make activate growing. This is coming again, so I think it's strong enough for these trees. ठीक है। Apples, अब sorry. ये कट मैंने इनको बोला ये कट मारो, तो ये कह रहे हैं कि जी अभी हमारे पास इस साल फ्रूट के लिए है, वैसे ही ये मोटा हो जाएगा एक आधे साल में, तो कोई फायदा नहीं। इसको कट मारने से ये और भागेगा और मोटा होएगा, इसकी जान खाएगा। तो इससे बढ़िया अभी फ्रूट ले लो और फिर इसको और इसको रिन्यूअल पे डाल के उतने में बाकी तैयार कर दो। जैसे इसको एक बार रिन्यूअल पे डाल दिया, हाँ ठीक है जी, फिर दोबारा ये और मोटा हो गया एक बार, दूसरी बार कैसे करेंगे? दोबारा वहीं पे रिन्यूअल फिर तो चलता रहेगा ना। जो वहाँ से आगे निकलेगी, वहाँ से आगे निकलेगा, नई वहाँ से ब्रांच आगे निकलेगी ना, जो नई ब्रांच नई ब्रांच निकलेगी उस पे वो रिन्यू करेगी ना, वो रिन्यू होता रहेगा। वही तो फॉर्मूला कट जो है नई ब्रांच से, हाँ नए से कट करना, नए से नए में आखिर नए से तो नए से निकलेगा। Sir, in shady portions where the sun hours are very few, so we are dealing with the growth issue. So how to increase His the question is where the sun hours are less. growth? For example, this. चलो एक मिनट पहले एक इनका चलो देख लेना। His question is that there are places where the shade is more, sun is less. Less sun, yeah. So there they are having issues with the growth. So what can we do to spur, to get trees to grow more? Yeah. Growing in this direction or this direction? किस तरह से ऊपर को कि Upward direction. up direction. You can clean the leader, that's only one top. Okay. And put fertilizer, organic fertilizer. Manure Or gobar? if you're cutting here, it's not that you activate it. Then it's you activate this area here. काटने से कभी ऊपर नहीं जाएगा पेड़, काटने से नीचे को फटेगा हमेशा। अगर आपने ऊपर पकाना है मत काटो, छोड़ दो। You can work with hormones, Hormones. but I don't. But here we don't have hormones. you don't. Our government is so intelligent, it doesn't allow us. Okay. It doesn't allow. No, then it's. So this one, like it's going too down. So I think should we keep it? This one Yeah, I would keep it like this or something like this. No? for fruits. Yeah, otherwise we lose too much. And To reduce this, please. reduce this pruning, like I showed you here, in the plantation year, to cut, Okay. you will solve some kilo for that. If you make a pruning after plantation soon, you will reduce apples in the plantation year. ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोली, इन्होंने पहले बोली थी। ये कह रहे हैं कि हम जब पेड़ लाते हैं ना, हमारी टेंडेंसी क्या रहती है कि भाई वो हरा नहीं हुआ, अभी उसमें पत्ते नहीं फटे या डोरमेंसी ब्रेक नहीं किया, तो उसको मत काटो। ये कह रहे हैं अगर आप नहीं काट रहे हैं ना तो आप दावत दे रहे हैं इसको, ये अंधाई को। तो जैसे ही पेड़ आता है काट दो। इनफैक्ट इन्होंने ये बोला दैट वन ऑल्सो विच यू टोल्ड मी दैट इफ देयर इज सम एरिया यू कैन नॉच इज ऑल्सो। अगर कई बार पेड़ में क्या होता है कोई ब्रांच टूट जाती है हमारी ट्रांसपोर्टेशन में या किसी और में, तो हमारा एरिया काफ़ी खाली रहता है, तो ये कहते हैं उसको भी उसी टाइम पे जो है नॉच कर दो।
नॉचिंग उसी टाइम पे नॉचिंग मंथ्स कौन सा है? वो तो 20 दिन पहले जब आपका बट उससे पहले प्लांट हरा है, ठीक है, प्लांट हमने लगाया वो हरा नहीं, मतलब पत्ता फटा है कि पत्ता फटा कि नहीं फटा है? पत्ता फटा हुआ है, जैसे मान लो विगर विगर कुछ नहीं है, कट मारा हुआ है आपने, यहाँ से लीडर खुला ही नहीं है, उसके बाद क्या कैसे खुलेंगे समझ गए आप? इसमें तो चलो इतना आ गया ना, ये छोटा ग्रोथ ही नहीं आ उसमें है ही कुछ नहीं, हरा है बिल्कुल, मतलब पत्ते निकले हैं। हाँ, फेदर नीचे से ठीक डेवलप हो गया, लीडर नहीं बना। His question is some trees, tree, they cut it when the trees came, they planted it, they gave a cut here also, but after that everything is working, but this is not going up at all. The tree's leader is not going up at all. How much is the distance? कितना काटा आपने? The distance between the pruning and the first branches. Yes, it's like I said, if you're cutting here, you give the energy here. It's like you do something like this. Okay. You understand what His question is, he cut it here, Yeah. in the plantation here. I understand. We planted trees, these all worked, but the tree has stopped here, it is not going up at Yeah, all. but like I said, if you're cutting here, it's not that it's growing. If you cut here, it's like you stop here. Okay, in the plantation here only. Always. When the trees come. Always, because like I told you, if you cut here, what is coming in this area branches. Okay. So what should we do? Should we not cut? No, like, we have to cut when the trees come, na? There is no option. We have to cut them. As you told, we have to cut all. If you have this, then if you have this long area, yes, he cut it here also. Huh? You see, cutting. Huh? In this case, it was only 5 centimeters. Yeah, so this is But the I concern. think next year he will. साल भर भागेगा पेड़, कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसने कहीं ना कहीं एनर्जी नीचे को फाड़ी है या कहीं और को फाड़ी है, कोई इसका सेट फॉर्मूला नहीं है। प्लांटेशन ईयर में काटने हैं ऊपर से। हाँ, प्लांटेशन ईयर में काटने से वही तो काटते हैं, प्लांटेशन ईयर में काटते हैं। हाँ, शुरू से इतने प्लांटेशन ईयर में और अगर उसमें ग्रोथ नहीं आएगी दोबारा भी, अगर क्यों नहीं आएगी? इसमें आएगी ना, वो कह रहा है अगले साल वेट करो आप, आएगी। जैसे इस साल ऑर्गेनिक मैटर डालो तो नहीं आएगी, गोबर डालो। जैसे इस साल ज़्यादा ग्रोथ आई है, जैसे 4-4 फीट में जैसे ये ना हाँ, इस साल क्यों सर, जैसे ये ना इसमें ज़्यादा ग्रोथ 4 फीट की ग्रोथ गई है, इसमें फिर इस साल का लगना है। ठीक है। उसमें कट मारना, उसमें कट मारना। टॉप ही नहीं। नहीं, इस साल नहीं। जब अगर तो आपका देखो ना, नहीं, फिर ऐसा ना है, वो मतलब उसमें नजर है वो उससे क्या होगा ना, उससे देखो, इफ यू कट इट है, अगर आप इसको यहाँ काटेंगे ना, शुरू में किए ना, जैसे टहने यही निकलेंगे सिर्फ। अब लेट हो गया आपके लिए, अब ये पेड़ चला गया यहाँ पे। 20 साल का है ना, हमने टॉप किया है। हाँ ठीक है, ये ग्रोथ ज़्यादा हो रही है उसमें, तो ठीक है। ये नहीं लग रही उसमें। नॉचिंग नॉच कर दो ना, वही तो कह रहे हैं, नॉच कर दो। अगर आप ऊपर से काटेंगे भी ना, नहीं काटा सिर्फ 6 इंच में ब्रांचें आएगी, उससे नीचे फिर ब्लाइंड रहेगा। ब्लाइंड के लिए तो नोचिंग ही है। नॉचिंग कर दो। हमने की इस बार 80%। तांडा जी, जैसे जब प्लांट आता है ना, मान लो काट दिया, तो उसमें हमें पेस्टिंग वगैरह करनी चाहिए ताकि सैप वगैरह लीक ना हो। There is another question, like we cut the trees as trees come. When they are planted, Before plantation we cut them. So is it required to put some paste on it? No, usually you plant it and then 2-3 weeks after they are start growing. जरूरत नहीं Then they are तो closing. भागेंगे ना, तो क्या बंद हो जाएगा खुद ही। नहीं नोट। अच्छा, आप पूछ रहे थे, ये पूछ रहे थे क्या? जैसे आप आइए प्लांट लगाएगा, उसमें ये ऐसा ग्रो नहीं करेगा, क्योंकि जब कट लगेगा ना, यहाँ पे बीमा लगा, और किसी कारण यहाँ पे कुछ ऐसे काटे थे जो कुछ तो काटनी पड़ेगा ना। एक मिनट पहले इसका कर लेते क्लियर, एक मिनट पूछे। जैसे यहाँ पे बीमा लगा है, ठीक है, यहाँ पे किसी कारण कट लग गया और ये ग्रो नहीं करेगा, बीमे पे ग्रो नहीं करेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे और उसमें ऊपर से नीचे तक बीमे भी लग गया, उसको ग्रोथ में कैसे ले जाए? His question is like in spur varieties. Let us Poor, say, let us say super chief percentage. So he says that only thing that is there is the spurs only. So what to do to get the? Can we cut these, or how will we? In spur. Yeah, in spurs. Spur is more difficult to get branches because Okay. spur usually you plant on 50 centimeters, Okay. 50-60 centimeters. And what if this? What about these? Can we like cut them and get the grow out? How will I we don't get know it? that on spur is working. Okay. A spur usually have 4-5 trees in this area, and here it's only the leader. Okay. And the leader then is full of apples. That's it. So, but his concern is that even in आपकी वैरायटी कौन सी इसमें ऐसा इशू है? स्पर में है ना? स्पर में तो यही बोला उन्होंने कि स्पर में प्लांटिंग डिस्टेंस कम कर दो, उसको 0.50 पे ले आओ, डिस्टेंस कम कर दो ना, नजदीक ले आओ, 3 फुट की जगह 2 पे लगा दो। उसमें उसको नजदीक ले आओ, पेड़ को नजदीक ले आओ, पेड़ को नजदीक M9 पे? उसका कैरेक्टर ही वो है। M9 पे, M9 पे स्पर M26 पे होगा, किस पे लगाया स्पर? होगा। दोस्तों इसमें क्या नाम से आपका 111 पे।
पर में ये वैरायटी he is asking like the spurs have formed here. There? Yeah, they're there. So how will we make branches out of them? Will the branches come out? I didn't understand. What? कट मारते हैं ना Here he's showing that the spurs have come. Here you can see one spur. Here. Yeah. So he wants branches out. So he Yeah, says- you must. आगे से वो तो बोल रहा सारे काट नहीं You must try. Which one is done? This also, yeah. एक्टिवेट हो गया Activate. सर्दियों में ये भी तो सिर्फ एग्जांपल दिया हाँ, ये तो ही करो बोला जो सर्दी में जो काटेंगे उससे ब्रांच बनेगी, गर्मी में जो काटेंगे उससे कट जाएगी। बोल तो दिया, सिंपल फॉर्मूला। तो पहले इसने तो डेमो दिया ना बाकी तो खुद करना साहब Hello विनय भाई। में मत करना That if the distance of rows is less, can we go more higher up? But ये कहते हैं उसका सेंस नहीं बढ़ेगी ना, क्योंकि फिर आप फ्रूट कैसे तोड़ोगे? In Italy, we speak. नहीं मेन तो शेड फैक्टर भी है ना। In Italy, we have 320. Yeah, because mechanical. Yeah, because we are mechanical. Yeah, and also we say that the sun is coming down. Okay. Till there. Here, if you're close, it will not come, but it's another situation. ट्रीज की शेड एक दूसरे पे Because पड़ेगी। here the problem, the benefit we have is that sunlight is too much. It's almost 13-14 hours even in summers. So and the angle of sun is so good that it does come. Yeah, exactly. Yeah, we don't have that problem. So वो हमारे हाथ में। The high, what is here the high? 3 meters. It's almost 3 meters. Yeah. 3.5, 4 meters is not a problem. 4 मीटर तक जा सकते हैं। 4 मीटर जाते हैं। और कुछ? और जी और पूछो है कुछ? सर इससे जब हम प्लांटिंग मटेरियल लाते हैं ना सर, ये जो प्लांट्स को पानी में डिप करना है तो लगभग कितने आवर्स या दिनों में करना है, और सेकेंडली कि जब वो ये सब स्प्रे करते हैं पानी की, चलो ये करो। His first question is like trees come in transport to us. So for how much time should we keep them in water, and how much should we dip? Should we put them entirely, or should we just dip it this much? How much to rehydrate? Only like this. Okay. In पहले तो इतना ही करना है। maximum 48 48 hours. hours. 2 hours maximum. Because if you too long, then it's they will not start. They don't start. 48 घंटे लोग एक्चुअली जनरली 7 डेज रखते हैं। 48 घंटे पूरा डिप कर पूरा डिप करना है। जो ये बता रहे हैं 48 and his second question is that sometimes a tree takes time to break the dormancy. So here it is a practice which I don't support. People are spraying the trees with water. It makes no sense. हाई टेम्परेचर For me, I don't know what you say. So what do you have It's to the say? first time that I heard something. I don't know if it's right or not. भाई कुछ नहीं होगा because ये तो पानी तो पत्ता लेगा ना, पत्ता तो है नहीं इसमें, और लकड़ क्या लेगा? इसमें सर कैपिलरी एक्शन का है, तो मुझे लगा पता कि मैं मे The problem, of course, is later you plant, higher the temperature, Yes. more difficult It is as the trees. yes. वो ये टाइमिंग वाला ही है, लेट जो। मैं 48 घंटे से आना रखो पानी में पूरे डिप करने नहीं इतना बोला, बेस इसका इतना बस 2-2.5 फुट है बस इतना ही रुकना है। और बोलता मेरा अगर ज्यादा रखेंगे ना फिर ये सर जैसे इसकी ग्रोथ चेक हो गई, इसको खाने का नहीं मन करेगा सो जाता ना फिर Should we cut it here to make it grow more? उसको कम मिलेगा तो वो बोलेगा नीचे डालना, नीचे गोबर डालना, नीचे पड़ेगा, जब नीचे पड़ेगा तभी पेड़ ऊपर को जाएगा। 99 or 100% growing in the top is never a problem. Okay. Maybe it's coming a little bit later, Yes, but yes. it's coming. Yes. The problem is if you don't have branches here, Okay. then it's सबसे मेन चीज़ ये कहने सबसे बड़ी दिक्कत जो अगर किसी M9 में या किसी बूटे में है, अगर यहाँ पे हमारे पास फ्रूट ब्रांचेस नहीं है, ग्रो इस साल नहीं तो अगली साल आएगा, अगली साल नहीं तो अगली साल आएगा, क्योंकि पेड़ ने भागना है, बट अगर फ्रेम नहीं है तो फिर ये कोई फायदा नहीं है। सिंपल इनका एंड इरिगेशन के बारे में क्या बोलते हैं? वाटर इरिगेशन तो चल पूछ लेते हैं। They are asking about water irrigation. Like, is there a schedule? How much should we irrigate, or it depends upon the tree and the condition? depends on weather, condition, Okay. temperature. And how wet should it be? Should it be like too wet, or should it be like this? The too wet is not good. Whereas if you plant the trees and it's always wet, what is coming? They will not make roots because they have enough to eat. If sometimes it's dry, so they are going to look. No? तो ये कह रहे हैं कि अगर तो गीला ही रहेगा हमेशा तो उसने रूटने वहीं पे उसका काम तो करना नहीं, रूटने वो आलसी हो जाएगी। मैं मतलब सिंपल भाषा में बोलूँ, बट अगर पानी कम होएगा तो फिर मेहनत करेगी, पानी ढूंढने के लिए अपने हाथ पैर मारेगी तो फैलेगी, जब फैलेगी तो फिर ये चढ़ेगा। More roots than you have, Yes. more power
तो ये जड़ें जितनी ज़्यादा आपकी जाए उतना, तभी ये जो ड्रिप का भी है इसको थोड़ा सा कैन वी लाइक पुट इट अ बिट फार दिस थिंग, because if we put it too near after 1-2 years, after 1-2 years, not in the planting year. okay, in planting it should be near, then it should go wide. पहले नजदीक लगाओ, उसके बाद उसको दूर दूर ले जाओ पानी के लिए। जी जी जी, खाली रह गया ऊपर आ गया नॉचिंग के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है सर। जैसे इसमें तो काफी ब्रांचें नीचे आई हुई जैसे लाइट के लिए, तो उसके लिए ठीक नहीं 2 साल बाद निकलेगी सर। so he says that since we have good branches here, so if we take many branches here, it could be like putting some it can be stopping some light, it will bring shade. So should we have branches here, or what should we do? Yeah, here would be nice if you have branches like this. Okay, That we have some apples here. smaller ones. Because if you have branches, how its branches is always growing where the light is. No? Okay, yes, Then we will have here a lot, and this one are coming smaller and smaller. okay, The tree is coming out of equilibrium. okay. ये कह रहे हैं कि कोशिश जैसे ये है ना, ये यहाँ के लिए इस तरह का बिल्कुल छोटा जो है पिन्ने ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा ब्रांचेज आएगी तो वो लाइट के लिए ऊपर को भागेगी, नीचे शेड करेगी, तो इसलिए ये साइज़ ठीक है, बट ब्रांचेज होनी चाहिए। सॉइल के अकॉर्डिंग हमने इसमें रूट सिलेक्शन कैसे करना है कि हम कौन से रूट पे वर्क करें? ये तो 9 पे करते काम। आई एम टेलिंग देम यू ओनली वर्क ऑन M9, सो इज आस्किंग 9 पे करते हैं, बाकी किसी को मानते नहीं। At the moment, yes. एक इनका क्वेश्चन है जी, नीचे से ना ओवरलैपिंग का क्वेश्चन है। गाला में बोलते हैं ऊपर ना थोड़ी मोटी टहनी आ रही है और नीचे बच रही है, उसके लिए क्या करें? उसको रिमूव ही कर दे। सो कैसे मतलब कैसे समझाना है? कहने का मतलब जो नीचे के बेस है ना सर, वो ब्रांचेस हाँ मैं समझ गया, वो वीक है ऊपर। सो इन गाला व्हाट दे आर फेसिंग इज दैट दीज ब्रांचेस व्हिच आर on the bottom, they are weak, but these branches on the higher side they're getting stronger. Gala. Yeah, gala. So what Gala. should we do? Like what can be done? What we must do is first possible in the plantation activating the growing in there, and then here when they are coming too big you must cut it out. रिन्यूअल पे डालो उनको, नीचे वालों को। इसीलिए जो प्लांटेशन ईयर का ना जी, बार बार कहते हैं प्लांटेशन ईयर में हमें मारना ही मारना है। नहीं तो कई डॉक्टर यहाँ ऐसे जो बोलते हैं जी कार्बोहाइड्रेट सेव होता है, वो कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, तो ऐसे कोई कार्बोहाइड्रेट कट मारो। This is typical from Gala that we call it that it's going very fast out of equilibrium. If you're not working in the first years to have good branches here, then you. और ये कि जो पेड़ है, जो अगर आपने शुरू के 2-3 साल काम नहीं किया तो बात वो ये आएगी कि ऊपर को ऐसे चला जाएगा, फिर वो ऐसे शेप का बन जाएगा। एंड वन अगेन बर्निंग क्वेश्चन दैट इज एवरीवेयर, आई आस्क्ड यू मॉर्निंग आल्सो, व्हाट अबाउट टेकिंग फ्रूट इन द प्लांटेशन ईयर? I calculated 0 kilos in the plantation here. मत लो। Then if it's 1-2 apples per tree, it will not make a मच डिफरेंस। difference. 1-2 सेब से कोई फर्क नहीं पड़ना, ना अमीर होने ना कुछ और बनना। But when you go to prune after planting, not thinking to make apples, Yes. thinking to make the structure of the आप tree. जब पेड़ पहली साल लाते हैं और उसको बनाते हैं तो आपका पहला काम है कि मैंने जैसे घर की बुनियाद है कि मैंने बुनियाद बनानी है पहले, उसके बाद उसमें रहना शुरू करूंगा, उसके फायदे उठाना शुरू करूंगा। एंड इन द सेकंड ईयर How many kilos? या लाइक व्हाट 15 apples would be 3 kilos. 15 एप्पल सेकंड Then 5 kilos, and for 50 year in the full production. फुल प्रोडक्शन। एंड फॉर गालास 15 kgs Yeah. गुड इनफ। 15 किलो लो, 15 किलो लो। ठंडा जी जिस साल पेड़ आता है ना, जैसे ये ब्रांच है उसमें, तो इसको यहाँ से क्लिक करना है या बिल्कुल थोड़ा सा हाफ पे? ओके, वो सिंपल फॉर्मूला इन्होंने कहा 40 सेंटीमीटर। ओके 40 सेंटीमीटर डिपेंड करेगा ना, अभी यहाँ पे देखो ना, आपका टोटल जगह है इतनी, अब इसमें गुंजाइश यहाँ पे भी इतनी है, ओके यहाँ पे भी इतनी है, तो वही मैथ उसके हाफ सेंटर पॉइंट पे। फिर उसको सेकंड ईयर पीछे कर सकते हाँ क्यों ना कर सकते। His question is like, if it goes longer, then we can we cut it back? Now or the plantation? No, year? the second year. Second year. After plantation. For Yeah, of plantation. course you must. करना ही पड़ेगा पीछे। सर जो ये न्यूट्रिएंट्स देंगे ना एनपीके या कोई माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देंगे तो कितने इंटरवल के बाद अपने? What about the dosages? How should we give the nutrients to it? Should it be in one go or should it be in bursts, small bursts, or how? Smaller one. Small one. And what should be the frequency? After how many days? After depends what products you give, but in my opinion, after 2-3 days. हर 2-3 दिन के गैप के बाद ही आप दो पेड़ को कुछ ना कुछ ताकि वो ऑब्जर्व कर सकें।
ऑब्जर्व कर सकें। बेसिकली फोकस किस पे होता है जी एनपीके में क्या डालते हैं? The question is like, what is your focus in nutrition management, especially for galas, since galas are, demand of gala is very high. So what nutrition, like what is your practice there? They just want to have an idea, like what nutrition you give more and what less. What is the way you go there? What you are doing usually, because I don't know your soils here. What you are doing usually here. हम क्या करते हैं इनको बताओ ना, हम कितना देते हैं, क्या देते हैं बेसिक? हम क्या देते हैं अपनी सॉइल में? नाइट्रोजन ज़्यादा देते हैं, कितना %? So he says that he's only giving nitrogen to the tree. Yes, sir. Higher ratio. Initially, higher ratios of nitrogen. Okay. In which period? कौन से टाइम में? शुरू से लेकर एंड Last month. Growing or March? Yeah, more after March, April, once the green dips come. What I can recommend also some magnesium and calcium. Magnesium, calcium डालो साथ में. Closer you go with the fertilizers to the harvest period, less quality for the storage. Basically, मतलब जो वॉलनट तक हमारा है ना, अगर फ्रूट ले रहे हैं वॉलनट तक ही हमारी जो है कंसंट्रेशन होनी चाहिए न्यूट्रिशन पे, उसके बाद कम कर दो, क्योंकि अगर हम चलते रहेंगे तो फ्रूट जो है हमारा बुर्द हो जाएगा, बुद्धा हो जाएगा, बहुत जल्दी बुद्धा हो जाएगा। इसलिए जितना हम कर सकते हैं वॉलनट साइज तक ही कर सकें, बाकी तो कहते हैं बाकी तो मिट्टी पे डिपेंड करता है। मतलब ही डज नॉट वांट टू से ऊपर ही बोलने की ऐसी चीज़ नहीं बोलना चाहते कल को प्रैक्टिस हम यहाँ करें और उल्टी पड़ जाए, क्योंकि इनकी अपनी प्रैक्टिस है ना। Yes, with the fertilizer. जैसे गोबर उसको किस तरीके से कितना देंगे? वो ही इज आस्किंग अबाउट मैन्योर।